Assalamu alaikum and good morning. This is Engineer Aftab Shah with you with a new lesson from literature. Actually, we are going to actually start one new field of study that is called pragmatics. And this is part of our syllabus of semantics and pragmatics. Pragmatic को आज हम लोग जो है वो शुरू करेंगे. बेटा सारे लोग स्लाइड्स ओपन कर लें. और प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है, ये फील्ड कहाँ से आई और इसका क्या मामला, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. हमने अभी तक जो देखा है उसमें जितने भी हमने टेंसेस और सारा कुछ किया है, इसमें हम देखते हैं कि स्पीकर खुद कोई काम कर रहा होता है. जितने करेक्टर्स हैं वो खुद कुछ काम कर रहे होते हैं. बट नो, प्रैग्मेटिक्स इज अबाउट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कि जो लिसनर है वो क्या करता है. हमने जितनी भी स्टडी की है, हमने जो भी मामला किए, दे आर ऑल अबाउट व्हाट वर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्पीकर. ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है ये फोकस करेगी कि स्पीकर की बात को सुन के लिसनर जो है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करे. इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, लेट अस स्टार्ट. दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स, यानी इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स ऑन रीडर. And it's more like about reader-oriented theory or reader-oriented criticism of literature. So let us go to slide number 2. What is the meaning of pragmatics? We will have the definition also coming in the later slides, but we will study the major points related to pragmatics in these slides. Pragmatics is the study of the meaning in context, and it deals with the implied meaning as opposed to the mere lexical meaning expressed. It says that pragmatic means what is the intention of the speaker when the speaker is actually saying something to some listener. It's not about words only, that he listened the words and he is finished. No, it's about what is the actual desire of the speaker that he wants to get fulfilled by the listener. कि उससे वो एक्शन क्या करवाना चाहता है, उस फिक्रे को सुन के क्या एक्शन जो है वो करवाना चाहता है रीडर से. एक्चुअली दैट इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी इन प्रैग्मैटिक्स. इज क्लियर? और इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द स्टडी ऑफ द एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द लिसनर when the listener is told something by some speaker. I think it's clear to everybody. Okay. Let us read this line again. Pragmatics is the study of meaning in context. It's not only the meaning of one word or two words. It's the meaning in context, the full context. And it deals with the implied meaning and also the meaning that the speaker has hidden in his mind, as opposed to the mere lexical meaning. Lexical meaning means the meaning of the words. For example, if I say to somebody, please bring me a glass of water, मैंने ये फिक्रा बोल दिया. No, the listener actually will listen it. Please, बराए मेहरबानी, bring, लाए a glass of water, पानी का एक गिलास. वो पूरे फिक्रे को जोड़ेगा. फिर वो देखेगा, okay, he will go and bring a glass of water. ये जो मेरे एक आवाज को सुन के उसके ऊपर जो एक्शन हुआ है, दैट इज एक्चुअली प्रैग्मैटिक्स. ये जो एक्शन है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. या फॉर एग्जांपल मैं किससे पूछता हूं, व्हाट इज योर नेम, इट्स अ क्वेश्चन बाय द वे. वो मुझे बताएगा माय नेम इज. हाउ ही कम्स टू नो दैट ही नीड्स टू गिव मी रिप्लाई माय नेम इज. या उसको कैसे पता चलता है कि व्हेन आई आस्क हिम टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर वो जाके पानी का गिलास क्यों ले आता है. How he comes to know. ये क्या रिलेशन है इसके अंदर. हमने तो एक वर्ड बोला है और उस वर्ड से एक रिएक्शन हुआ है, एक चेंजिंग आई, रियलिटी में एक तब्दीली आई, हकीकत बदली है उससे. तो आई एम यूजिंग सम डिफरेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स. मेरे आवाज से रियलिटी में एक चेंजिंग आई. फॉर एग्जाम्पल, couple of minutes before, I asked our wonderful guy to be ready, make the set ready because we are going for recording. And he quickly stood up from the stage, came upstairs, and he fixed the lights and the camera
and we did all of this. I spoke one sentence only, please make this at ready. And he did all that stuff. How he come to know that my sentence means that he needs to do all these things. ये बेटा कैसे हम पहुंचते हैं अपने वर्ड्स से चेंज इन रियलिटी पे, यानी सादा अल्फाज में एक्शन के ऊपर कौन सा मैकेनिज्म है? वरना ऐसा भी तो होता है ना, मैं किससे पूछूं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझसे आगे कह दे थैंक यू सो मच, तो ये चीज सारी उल्टी हो जाएगी. इफ आई आस्क समबडी व्हाट्स योर नेम, वो मुझे आंसर दे आई एम गोइंग टू होम, सारा खराब हो गया मामला. तो ये कैसे एक रिदम बनता है इन स्पीकिंग और किस तरह ये सारे मामला होते हैं, दिस इज ऑलवेज स्टडी इन प्रैग्मैटिक्स. अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो चीज है, जो मेन इसका जिस्ट है वो क्या है. इट सेज दैट जब कोई भी बेटा बात होती है, कोई भी स्पीकिंग होती है, कोई भी वर्ड बोला जाता है, दैट ऑलवेज हैज सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन आवर रियलिटी. हमारी रियलिटी के ऊपर इसका कोई ना कोई जो है वो असर होता है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलिटी? हमें पता हो रियलिटी क्या चीज होती है. इन सिंपल वर्ड्स, रियलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ थिंग्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक सादा अल्फाज में हम कहते हैं कि रियलिटी से मुराद है चीज़ों की जो है वो हालत किसी खास वक्त में. फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम वी आर सिटिंग इन दिस वंडरफुल रूम एंड देयर वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स हियर, लाइक वी हैव कंप्यूटर्स एंड वी हैव द पीपल एंड द स्टूडेंट्स एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद. दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस रूम. और जैसे ही somebody among you, if I ask you that change your chair, आपने अपनी चेयर को एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उससे क्या होगा? अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई. दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन रियलिटी. तो प्रैग्मैटिक्स बेटा देखती है हाउ द लैंग्वेज चेंजेस आवर रियलिटी. अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. हियर वी गो एंड रीड द नेक्स्ट लाइंस. How utterances are used. Utterances mean the sentences जो हम बेटा बोलते हैं, किस तरह हम उन फिक्रों को यूज करते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं. It's not about listening or reading, it's about using them, understanding the words, कि उनसे हम कैसे काम लेते हैं. It's about interpreting what speakers mean. Pragmatics के अंदर हम सिर्फ वर्ड्स के जो मतलब है उनके ऊपर नहीं जाते, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वर्ड्स के पीछे जो छुपी हुई इंटेंशन है वो क्या है. Why the speaker is actually speaking like this and what he is expecting the listener to do. What we actually had a portion in psychoanalysis, theory of literature. Clear? After that we go. In other words, दूसरे अल्फाज में pragmatics show how people make sense of each other linguistically. Pragmatics हमें बताती है कि किस तरह बेटा हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं उसकी गुफ्तगू से. यानी हमारी जुबान जो है वो हमारी नस्लों के बारे में पहचान करवा जाए. क्लियर? लेकिन ये कैसे फैक्टर होते हैं? व्हाट इज ऑल दैट स्टफ? यानी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आई यूज्ड द सेंटेंस वंडरफुल रूम एंड यू पीपल स्टार्टेड स्माइलिंग. हाउ इट हैपेंड? यानी What's happened by the way? Why was there smile on your face? तो ये सारी चीजें बेटा हमने देखनी है. ये कैसे जुबान के अंदर ये एबिलिटी कहाँ से आती है? किस तरह हम किसी को कहते हैं गो आउट और रन अवे और गेट लॉस्ट, और वो फिर भाग जाता है या चला जाता है या दौड़ जाता है. यानी हमने एक लफ्ज बोला बट एक्चुअली उसकी दौड़ लग गई है. ये कहाँ से अथॉरिटी आती है या कहाँ से चीज आती है? वी नीड टू स्टडी दिस वन. वरना तो वर्ड्स के अंदर इटसेल्फ दे आर जस्ट पार्ट ऑफ साउंड. वो तो एक साउंड है बस. और साउंड एक्चुअली फिजिकली क्या है? जस्ट हवा का एक वो ऑफ अफेयर है दैट इज कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ, दैट्स इट. लेकिन इस साउंड्स के अंदर ये ताकत किधर से आ जाती है कि एक लफ्ज सुन के बाज़ औक़ात लोग रोने लग जाते हैं और बाज़ औक़ात लोग कुछ लफ्ज सुन के हंसने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना वो लोग गुस्से में आ जाते हैं. हाउ दीस थिंग्स आर कमिंग. ये जो इफेक्ट्स है वर्ड्स के और सेंटेंसेस की और एड्रेस के, ये कैसे होते हैं? और ये बेटा इट्स नॉट इजी. यानी ये कोई आम स्टडी नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमने देखना होता है कि वर्ड्स कैसे हमें इफेक्ट कर रहे हैं. क्लियर?
ये ना सिर्फ साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है बल्कि आल्सो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ये एक बहुत बड़ी स्टडी है, हाउ द लैंग्वेज इज इंटरेक्टिंग विद रियलिटी, किस तरह जुबान से चीजों की असलियत जो है वो बदलती है। इसके लिए हियर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट utterances means spoken words are sentences, the use of sentences in a particular context, किसी खास जगह पे या खास मामले में अल्फाज का या फिक्रों का इस्तेमाल। utterances are actual physical events। utterances से मुराद बेटा जी असल में होने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू स्पीक समथिंग, यू नीड टू मूव योर माउथ। It's not about body gestures, etc. You need to move your mouth and you need to speak something. Interpretation based on. And we interpret the utterances. हम कैसे समझते हैं कि कोई क्या कह रहा है? हमारे पास जो उसकी बेसिस होती है, नंबर वन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हमें उसके अंदर मौजूद वर्ड्स का पता होना चाहिए। इट्स क्लियर। अदरवाइज अगर हमें किसी फिक्रे या किसी सुनी बात के अंदर वर्ड्स का पता नहीं होगा तो वी कैन नॉट एक्चुअली do what is expected of us. Number two बेटा, knowledge about the context, और हमें उस माहौल का पता होना चाहिए जिसमें वो वर्ड्स कहे गए। It's clear? Here we go to the next one. Studies on the pragmatics competence of L2. Pragmatics competence of L2 means second language की जो pragmatic काबिलियतें हैं हमारी, कि जिसमें हम किसी से कुछ काम करवा सकते हैं या हमें कोई काम कहा जाए तो हम वो कर सकते हैं। इसकी जो स्टडी है, learners have revealed that grammatical enhancement doesn't guarantee a desirable level of pragmatic enhancement। हमें फिर समझ के आती है कि जितनी मर्जी ग्रामर पढ़ लें, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है तो हम ज़बान को बाअसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें उसके सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, ये सारे फैक्टर्स का पता होना चाहिए। सिर्फ ग्रामर से कभी कोई जुबान नहीं आ सकती। एंड दिस इज एक्चुअली द रीजन आवर पीपल they are fully equipped with grammar. They know so many rules of grammar, but ultimately they still remain unable to speak English properly. The reason is that the grammar alone can guarantee you, it can't guarantee you to speak some language. We need to understand the pragmatics part of the language, then we will be able to understand it and speak it properly. And I was actually telling to the younger students, day before yesterday, I was teaching them some grammar and I gone through their booklet. उनकी बुक मैंने बेटा देखी सर, उसमें ग्रामर थी, उसमें कंपोजिशन थी, उसमें ट्रांसलेशन थी, but nothing about speaking। यानी ग्रामर भी पढ़ा दी, पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें फिर कंपोज करना, उन वर्ड्स को आपस में जोड़ देना कैसे, उनका मतलब कैसे, ये भी पता, लेकिन स्पीकिंग का कोई पार्ट नहीं है। बिकॉज जिसको प्रैग्मेटिक्स आ जाती है वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, वो फिर बोल के बड़ा कुछ करवा सकता है लोगों से। जिसको स्पीकिंग नहीं आती उससे ही कुछ करवाया जा सकता है, वो खुद कुछ नहीं करवा सकता किसी से। अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस वॉज डिलिबरेटली केप्ट आउट ऑफ आवर सिलेबस। स्पीकिंग को हमारे सिलेबस में क्यों नहीं बेटा रखा गया? बिकॉज जिन्होंने सिलेबस डिजाइन किया, दे डोंट वांट अस टू स्पीक इट, क्योंकि जो बोलता है वो खतरनाक हो जाता है, जो सुनता है वो तो सिर्फ काम ही करेगा। तो दिस इज एक्चुअली द रीजन द प्रैग्मेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें पता चलता है अल्फाज की ताकत क्या है, कि किस तरह हम अल्फाज को इस्तेमाल करके उनको जबरदस्त जो है वो उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने करवाना है। वी गो। तो ग्रामर जितनी मर्जी पढ़ लें, इससे हमारे पास बेटा जो प्रैग्मेटिक्स कॉम्पिटेंस से बोलने का, समझने का तरीका है वो नहीं आ सकता। वी हैव टू गो थ्रू अदर फैक्टर्स टू डू इट। एंड इवन एडवांस लेवल लर्नर्स आर इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर कन्वेइंग द इंटेंडेड इंटेंशन एंड पोलाइटनेस वैल्यूज। कि चाहे जो बड़े बड़े ग्रामेरियन जो है वो भी जुबान के अंदर किस तरह कोई आइडिया देना और किस तरह आइडिया को परसीव करना है वो नहीं कर सकते अनटिल दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स। और ये बेटा वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे। लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी, पूरी पूरी उम्र उन्होंने स्पीच एक थ्योरी हम पढ़ेंगे जॉन सर ने, उस बंदे ने पूरी उम्र एक थ्योरी के ऊपर लगा दी और इसका पार्ट है वो। और उसके आपको लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर जॉन सर के, आप उसको सुने। इस आई थिंक मोर देन 10 years ago मैंने उसके लेक्चर सुने प्रैग्मेटिक्स और आप देखेंगे इट्स वंडरफुल।
लोगों ने ऐसे ऐसे आइडियाज जनरेट किए कि हम लोग आज के दौर में हैरान हो जाते हैं कि आज से 4 साल पहले या 100 साल पहले जबरदस्त वर्किंग हो रही थी लैंग्वेज की। क्लियर? If we go to the next slide, please. The historical perspective of the historical background of pragmatics. ये कोई नई फील्ड नहीं है, ये बहुत पुरानी है। एंशियंट ग्रीस, यूनानी दौर में जुबान को इस्तेमाल किया गया लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए, अपनी तरफ सपोर्ट हासिल करने के, पॉलिटिकल और व्हाट डिबेट्स होती थी। यू नो अबाउट एरिस्टोटल, यानी एंड द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू सिट वाज द सेंट्रल प्लेस लाइक वी कॉल्ड पंचायत बाय द वे। ग्रीक के अंदर बेटा एक ट्रेंड होता था, जब लोग खाते पीते थे सारा कुछ, शाम में गप्पे मारने के लिए या गुफ्तगू करने के लिए सेंट्रल जगह पे बैठ जाया करते थे जाके, जिसको आज के दौर में हम पंचायत या कोई सिटिंग प्लेस कहते हैं। लोग बूढ़े जाके बैठ के हुक्का वगैरह पीते और वो they make gossips at general topics of the day-to-day life. Same was the case in Greece. The people used to go to different circles. There were literary circles, there were political circles, and there were other, we call them comedy circles, etc. Mukhtalif groups hote the. Whatever is your taste, you can go and sit in that place. Like we have so many groups on Facebook. You group of literatures, group of language, group of art, and etc. So many groups are there. तो लोग वहाँ जाके गुफ्तगू करते थे, और जो उनमें से ज्यादा बोलता था लोग उसकी बात सुनते थे, मान। दैट मीन्स कि जो ज्यादा प्रैग्मेटिकली कॉम्पिटेंट था, जिसके अल्फाज की सिलेक्शन ठीक होती थी, जिसके वर्ड्स की सिलेक्शन ठीक होती थी, लोग उसकी बात सुनते भी थे, उसको जानते भी थे, उसको मानते भी थे। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कमिंग फ्रॉम अरिस्टोटल, दैट इफ यू कैन स्पीक अ लॉट यू आर अ लीडर। अगर आप बहुत ज्यादा बोल सकते तो आप एक लीडर। अदरवाइज इन आवर रिलीजन इट्स नॉट लाइक दिस। हमें जो बयान किया गया है हमारे मजहब के अंदर, अगर बोलने का फायदा नहीं है तो खामोशी बेहतर है। बट इट इज कमिंग फ्रॉम एरिस्टोटल दैट एवरीबॉडी इज फॉलोइंग, ऑल आवर पॉलिटिशियंस एंड अदर people, they are following it. If you can speak a lot and don't give time to other person to speak, you are a leader. ये बेटा उस वक्त से हमें जो वो कॉन्सेप्ट मिलता है, that is coming from pragmatics. तो कहते हैं कि this concept is not a new one. This is coming from ancient Greece, and after that, after the Aristotles and Plato and so many, we have Greek philosophers. After that, it came to the next one, that is, it came to the next one. Just 1 minute, actually the slide is missing. Here we go. It came to the Rome. And we have so many Roman emperors and Roman, political figures, and they were very eloquent. बहुत ज़्यादा बोलने वाले, तेजी से बोलने वाले. And then it came to the being practical. और उसके बाद बेटा इसको बाकायदा जो है वो एज अ फील्ड स्टडी किया गया. It is in language philosophy that linguistic pragmatics possess its foundation. ये linguistic pragmatics है, ये philosophy of language के अंदर. And philosophy of language is why. अगर किसी से पानी मांगे तो वो क्यों पानी ला के देता? Very simple words. This is called the philosophy. Why of the language. And it emerged as a result of the ideas regarding the function and use of language by philosophers such as Wittgenstein, Austin, Searle and Grice. ये सारे के सारे philosophers हैं जिन्होंने जुबान के ऊपर बेटा काम किया. And John Searle is the one which I told you before. He gave speech act theory, wonderful theory, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. Is clear? हमने पिछले सेमेस्टर में अपने जूनियर्स को पढ़ाया था functional English. You know the meaning? Functional English. That was about pragmatics. What are the functions that we can do with language? It's not about study of English. It's not about grammar of English. It was functional English. It's clear to everybody? I think it is enough for today. And let us have the remaining slides for tomorrow lecture. I really wish you all the best. You people have any comments or any question? Okay, thank you so much. And those who watched our lecture on YouTube, you people are most welcome. If you have any comments or suggestion, you can write in the comment box. And we will be happy to reply that. Thank you so much for your time. Wish you all the best for the next time.